Assalamu alaikum everyone. I'm Sana Zafar and you're watching Stars of NUST. हम आपके लिए लाते हैं stars from all across the globe and from all colleges of NUST. आज हमें SCEE के first graduate ने join किया है. He's a very popular star and very young and still the senior most from their college because he's from the pioneer batch. We have with us Mr. Adil Oun. Assalamu alaikum Adil. Thank you for joining us. Walaikum assalam. Adil VP engagement है NUST Alumni Association के और इन्होंने SCEE से ग्रेजुएट किया बैक इन 2012 विद अ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग. करंटली ही इज स्पेशलाइज्ड इंजीनियर एट फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन. माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हैं, बहुत चीज़ों से रिलेटेड इनकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है. आइए इनसे मिलते हैं और पूछते हैं इन सब चीज़ों के बारे में. थैंक यू आदिल आपके टाइम निकालने का. Welcome and thanks to you, thanks to Team Stars of NUST for having me here. It's really an honor for me to be interviewed by the teams. I mean, especially you guys are doing a superb job. And ek mere introduction mein, I would like to mention my school as well. I'm President SCEE Alumni Association first, and then Vice President Engagement of NUST Alumni Association. So SCEE wale please offend na ho jaye is baat se. नहीं हम डेफिनेटली इसकी डिटेल में भी जाएंगे अभी, क्योंकि NUST Alumni Association में जो SCEE की पार्टिसिपेशन रही है उसके बारे में हम डिटेल में भी जाएंगे. थोड़ा सा आपके बारे में पहले हम जानते हैं. बताइएगा, माशाल्लाह यू हैव अ डॉटर. हाउ ओल्ड इज शी? Yes, I mean, I belong to a family of engineers. We are 4 brothers, and we all are engineers. I mean, my daughter, she's 1.5 years old. My dear daughter, I would say. Or Mary Mrs. She's a clinical psychologist working for Government of Punjab, and we all live happily in Islamabad. माशाल्लाह, that's great to know. माशाल्लाह. बताइएगा, how is it in Islamabad? क्या आपको काम के अलावा भी कोई टाइम मिल जाता है, or you're always busy with NUST and job? Well, time manage करना पड़ता है, and मेरी हमेशा से एक आदत रही है, or I always try to manage things. I mean, with job, the best thing about my job is ये बहुत ही I mean 8 to 5, that's it. After 5 p.m. I have plenty of time to give to my family, to my volunteer position, especially on top of it is NUST these days, जिसके ऊपर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं. Yes, it is being managed. माशाल्लाह, that's very important. और हम इसके बारे में अक्सर शायद कोई थोड़ा सा अनफेयर रखते हैं अपनी राय के, शायद जो बिल्कुल कोई टाइम नहीं दे रहा फैमिली को वही हार्ड वर्किंग है, बट दैट्स सो नॉट ट्रू एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट. ग्लैड टू नो दैट इट्स वर्किंग आउट योर वे. थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी की तरफ आएंगे. मैंने सुना है माशाल्लाह आपकी बड़ी नेटवर्किंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग हैं. यू आर नोन एज पीपल्स पर्सन. थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा. हैव यू डेवलप्ड इट ओवर टाइम? वाज इट ऑलवेज देयर? Well, networking, I have observed it is challenge for many, or even for myself it had been. If I talk about 2004 till 2005, I used to freak out having crowd of more than 2-3 people. I was an introvert person, but now I rightly and proudly say that my network is my net worth. And over the years I've started feeling comfortable in being uncomfortable going to the gatherings. So that's the change that over the years I have developed. And those who are listening to this interview, I would say, if at the end of the interview you find my professional or personal journey as successful, I would say largely it is because of my networking skills and my social connections. So how did I develop over time? Yes, I mean, as I mentioned, I was so introvert, but when I got into NUST, hostel life ने एक ऐसा exposure दिया, excuse me, that I participated in all the events, all the occasions, clubs, societies, sports tournaments, everything. I cannot say I did not miss anything, but largely I participated in all. Then summer vacations I never wasted my time. I was into many extracurricular activities. Say telemarketing का मेरे पास काफी experience है, for the UK energy campaign. Then Pakistan Tobacco Company की mystery shopper campaign I undertook during my studies. I talk about in 2009 onwards, I along with my few friends in Lahore, we formed a production house with the name of Crank Productions, which organized a lot of concerts, events in Lahore and as well as in Karachi. तो ये एक experience था मेरे पास extra. Then Pakistani Youth, एक NGO है, you might have heard about it. It is Karachi based, but इसका जो Lahore chapter है, we established
I along with one of my cousins, we established in Lahore, और it was into massive fundraising जिसने ना सिर्फ फ्लड विक्टिम्स जो कि 2009 ऑनवर्ड्स ईयरली फ्लड से अफेक्ट भी हुआ, अर्थक्वेक्स भी थे, और ऑन ऑल द नेचुरल कैलेमिटीज वी यूज्ड टू एवरी ईयर वी यूज्ड टू रेज फंड्स, और खुद जाकर हम सप्लाई करते थे राशंस एंड गुड्स टू द अफेक्टेड एरियाज एंड द अफेक्टेड. सो this was another experience which honed my networking skills. Thereafter, towards the end of the student life, हमारे ही नस्ट में एक हमारे बैचमेट थे, नस्ट के ही हमारे क्लास फेलो थे. He was senior vice president of the इंसाफ student federation, जो कि PTI की एक student and youth wing है. So we were very active participants of that youth wing as well, and we were those who actually introduced participation in political activities by the students, which was later on checked by the NUST administration. So composite of all, basically इस सारे ने मेरे networking skills को polish किया throughout my student life, and it did not stop in the student life. When I moved to my professional life, it continued the same. मेरे जो 2012 onwards first boss थे first company में, he is still my very good friend and we still have good family relations. हम being civil engineers, we have to interact with top management till the laborers. So अभी तक मैंने जितनी भी companies के साथ काम किया है, जितने भी लोगों के साथ काम किया है, I am still connected with all. Having that said, नेटवर्किंग करना आसान काम है, नेटवर्क्स को मेंटेन करना उससे ज्यादा मुश्किल काम है. इट रिक्वायर्स योर टाइम, इट रिक्वायर्स योर मनी, इट रिक्वायर्स you have to compromise a lot of family time, but then that's why I say now I feel comfortable in being comfortable. I mean इसका एक एविडेंस इस चीज पर है. I left NUST back in 2012. And Alumni Association के जो elections थे, that those were conducted for the first time in 2020. Such massive turnout by SCEE. Since 2020, I guess there were only 2,200 alumni, जो कि 22 to 300 alumni थे. Excuse me for if the figures are wrong, but more than 1,000 alumni participated in the election. So if in 8 years somebody can stay connected with this much number of alumni, that requires something, that requires some efforts, I would say. बड़ी पॉजिटिव बात की आपने और बहुत अच्छी बात है. इट्स वेरी इनकरेजिंग टू नो. आई एम श्योर पीपल वाचिंग कैन लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज हम कई दफा ये सोच लेते हैं कि इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट और इफ यू आर नॉट रियली इनटू इट, you can't do it. It's set for just these couple of people or for this box who take. But like you said, if you go out there, you put yourself out there, and बहुत नेक कामों के लिए आपने बल्कि वॉलंटियर करते रहे और उसमें आप पार्टिसिपेट करते रहे, इट हेल्प यू ग्रो इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे. सो आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट. वेरी प्राउड ऑफ यू बाय द वे. थोड़ा सा आते हैं नस्ट मेमोरीज की तरफ. थोड़ा सा बताइएगा स्की का टाइम कैसा था? डिड यू हैव फन टाइम्स देयर? एनी फ्रेंड्स, एनी टीचर्स यू वांट टू मेंशन? Well, fun time, I would say हमारा जो ग्रुप था नस्ट में, since we were the pioneers of नस्ट, हर नस्ट में क्रिकेट सबसे पहले हमने शुरू की. फर्स्ट बॉल हमने थ्रो किया. आई रिमेम्बर NSTP के सामने जो रोड है जिसके ऊपर देयर यूज्ड टू बी अ हेलीपैड, वहां पर सबसे पहले क्रिकेट खेली गई. फातिमा हॉस्टल्स जो गर्ल्स हॉस्टल्स थे, उसी के जो मैच था इनिशियल डेज में, both male and female students were using the same mess और stagger करके उनके टाइम को. So a lot of NUST memories. हमारा जो ग्रुप था, we were group of 16, और इतनी कॉन्क्रीट बॉन्डिंग आज तक उन 16 की है और उस वक्त भी थी, that हमने कभी एक दूसरे के बगैर डिनर पे भी नहीं जाते थे. We used to wait for each other. और ये ना सिर्फ स्की में हम प्रोमिनेंट थे, we were prominent all across NUST. So memories तो बहुत ज्यादा हैं. और बट मैंने जो सिंस वी हैड अ डिस्कशन ऑलरेडी, तो मैंने एक जस्ट कपल ऑफ मेमोरीज सोचा कि टू शेयर विद ऑल, और दैट टू इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड पीपल्स मैन. आई रिमेम्बर इन हमारे ही ग्रुप के एक दो फेलोज थे जो कि जिनकी जो फीस होती थी मंथली,
सेकंड ईयर थर्ड ईयर में वो स्पेंड कर देते थे, फैमिली से फीस वगैरह आती होती थी और हॉस्टल लाइफ में वो एंजॉयमेंट के ऊपर उसको स्पेंड कर देते थे। और टुवर्ड्स आई नेवर डिड दैट। सो लास्ट सेमेस्टर में द यूनिवर्सिटी वाज बेसिकली ट्राइंग टू रिकवर ऑल द फीस एंड दे वर सेइंग कि जी आपको हम बैठने नहीं देंगे एग्जाम्स में अगर आप लोग अगर आप ये अपने जो बैकलॉग उसको कंप्लीट नहीं करते। तो हमने खैर somehow we were managing funds, तो one of the friends requested me कि यार तेरी तो हमेशा से फीस पूरी रही है, तुझे किसी ने एग्जाम से मिड टर्म एग्जाम फाइनल सेमेस्टर से तुझे कोई भी नहीं उठाएगा, तो प्लीज मेरे में 50,000 ऐड कर दे, सो दैट I'll also be able to appear in the exam। मैंने कहा यार चलो ठीक है, I'm not encouraging all the listeners to do that, but साथ में डिस्क्लेमर भी देना जरूरी है। So मैंने उसको दिया and you know what, the first exam of the midterm after 1 hour एकदम से जो हमारे जो एसोसिएट डीन एट दैट टाइम ब्रिगेडियर लियाकत ही केम और उन्होंने आके ना नेम्स कॉल करना शुरू कर दिए। तो जिसकी मैंने हेल्प की थी he remained in the exam और जिसने हेल्प बेसिकली की थी उसको उन्होंने उठा के एग्जाम से रिमूव कर दी और आई फ्रीक्ड आउट कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो अगेन अब मेरे लिए जरा स्टूडेंट लाइफ थी, हमारे लिए फंड्स मैनेज करना एकदम से इतना मुश्किल काम था कि मैं कहाँ से करूंगा। मैंने तो ऑलरेडी जो मेरे घर से मैं उसको पे कर चुका था। नेक्स्ट डे आई टुक अ रिस्क अगेन, मैंने फिर जाके एग्जाम में अपीयर हुआ एंड सेम स्टोरी रिपीटेड अगेन। और मुझे याद है कि इट्स नॉट फनी एक्चुअली, इट वाज टू एडवेंचरस कि यार ये हुआ कि लकीली आई मीन फाइनल सेमेस्टर है, आपके दो सब्जेक्ट्स के मिड टर्म्स में आपके मार्क्स ही ना काउंट हो, हाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू। सो मैं इमीडिएटली आया, रिक्वेस्टेड फ्रॉम हेल्प फ्रॉम वन ऑफ माय कजन्स, उससे मुझे इमीडिएटली ट्रांसफर किए और एवरीवन वाज लाफिंग आउट कि यार ये तुमने किया क्या है, तुम्हारे जिसकी तुम हेल्प कर रहे हो ही इज इन द एग्जाम। और वो बेचारा भी चुप करके सिर्फ हंसी जा रहा था, ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी although I was in a in too much stress, but luckily alhamdulillah I had a word later with the associate dean और things got settled और उन्होंने मुझे उसमें compensate किसी तरीके से कर दिया था। तो the funniest part was कि मैं नेक्स्ट डे कैश अपने थर्ड एग्जाम में साथ लेकर गया था कि सर ये देखिए मेरे पास कैश है, मुझे प्लीज पेपर दे लेने दें। The other thing is इन्हीं एग्जाम्स में हमारे एक कोलीग थे, एक स्टूडेंट थे हमारे साथ, ही वाज वो बहुत ज्यादा एग्जाम की टेंशन ले लेते थे, इतना इजी एग्जाम था। और जब हम एग्जाम देकर सारे जल्दी 1 घंटा पहले बाहर आ गए थे, वी ऑल वर एंजॉयिंग। और वो कैफेटेरिया में ना बिल्कुल लास्ट मिनट पर एग्जाम देकर बाहर आया और वो बिल्कुल वो टेंशन में था कि यार ये इतना मुश्किल एग्जाम आ गया। हमने उसका इतना मजाक उड़ाया कि उसको कैफेटेरिया में SCEE की जो रूफ टॉप था उसे उल्टा लटका दिया और होल बैच वाज विटनेसिंग कि जिस तरीके से हमने उसको मॉक किया था। उसने इतना माइंड किया इस चीज को, ही रैन टुवर्ड्स हॉस्टल, उसने अपना डोर लॉक कर दिया और उसने ऊंचे से गाने लगा दिए। जब हम वापस आए कैंपस से, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। एंड इवेंचुअली क्या हुआ, उसे हमने आके बहुत कहा यार प्लीज दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोलो, से नहीं खोला। वी न्यू के दैट ही इज बीइंग ड्रामेटिक। हमने फिर नस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व कर दिया, जी स्टूडेंट ने सुसाइड कर दिया। सब पहुंच गए, उसको सब नॉक करते रहे, उसने दरवाजा नहीं खोला, बट वी न्यू दैट नथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड। हम सब उस पे हंस रहे थे। इवेंचुअली हमने नस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया लेट्स ब्रेक द डोर। हमने सब वो अपने टूल्स वगैरह लाके, ईंटें लाके ना हमने सब कुछ तोड़ दिया। व्हेन वी गॉट इनसाइड तो वो कंबल के अंदर ना लेटा हुआ था और वो सिर्फ एंजॉय कर रहा था। और हुआ ये कि फिर ही हैड टू पे ऑल द डैमेजेस जो कि हमारे तोड़ने की वजह से और जो इस तरह हुआ। तो दैट वाज आई मीन मे नॉट बी दैट फनी फॉर द लिसनर्स, लेकिन ये है कि सिंस व्हेन इट वाज हैपनिंग तो उस वक्त हमें इट वाज वेरी वेरी फनी फॉर ऑल ऑफ अस जो इस तरह से हुआ था एंड डिफरेंट। ऐसा उस टाइम में हुआ नहीं था कभी। Yes, I think I can go in detail about all of this, but I won't for other reasons जो मैं आपको इंटरव्यू के बाद बताऊंगी। लेकिन yeah, fun to know, ये उस वक्त होता है, आपके लगता है hindsight में of course you look at things very maturely and very differently, लेकिन उस टाइम जो कुछ हो रहा होता है that those memories stay with you forever. Next yes, question. exactly. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आऊंगी, थोड़ा सा प्रोफेशनल जर्नी पे आते हैं आपके, जब आपने ग्रेजुएट कर लिया उसके बाद से माशाल्लाह अभी जहां तक हैं आप। और ये भी बताइएगा कि इज इट वेयर यू वांटेड टू बी, ऐसा ही प्लान था? जब पास आउट हो रहे थे उस वक्त
तो कभी नहीं पता था कि हमारी फर्स्ट जॉब कहाँ पर होगी और हमने कहाँ पर जाना है। बट यस, क्योंकि नेटवर्किंग स्किल्स काफी अच्छे थे, कनेक्शंस काफी अच्छे थे, और पीपल मैनेजमेंट का जो स्किल हमने लर्न किया था, आई न्यू दैट इज गोइंग टू बी माय स्किल। आई कैन नॉट बी अ वेरी गुड डिजाइनर, बट यस आई कैन बी अ गुड मैनेजर। ये मुझे दैट्स व्हाट आई न्यू, और मुझे पता था कि मैं अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब्स में जाऊंगा तो दैट विल बी गुड for me. So I started off with one of the state of the art projects in Lahore back then in 2012. वो जो लाहौर मेट्रो बस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन थी, बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स उस वक्त यूज की गई थी। इट वाज द फास्टेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ दैट टाइम। आई वाज विद ZKB, एक कंपनी है, वहां पर मैंने उधर से मैंने स्टार्ट किया अपना करियर। Then I moved to DDFC group of companies as the projects coordinator, जहां पर मैंने multiple projects international clients के साथ execute करवाए। Then I moved to Saudi Arabia with I worked for 4 years with the Tamimi group of companies as the project engineer, जहां पर as in the beginning I was just supervising a lot of activities, क्योंकि हमारे लिए culture थोड़ा सा different होता है पाकिस्तान से जब आप move करते हैं। But let me tell you, towards the end of my journey in Al Tamimi group of companies, I was projects engineer for projects worth more than 350 million Saudi riyals. So उन projects को के civil works को as a project engineer देखना, that was best experience working with the Saudi electricity companies 5-star programs. तो that basically was the experience जिसने मुझे career में मेरा career को polish किया. And the hard decision was to come back to Pakistan. Why did I come back in 2018? Because of my father's health. I mean, मेरे father उनकी underlying conditions थी जिसकी वजह से, medical condition थी जिसकी वजह से I had to move back to Pakistan, and I'm still working in Pakistan. In Pakistan, I worked first as a deputy project manager with the National Logistics Cell, and then I was manager projects at Infrastructure Development Authority of Punjab, and now I'm currently working with one of the largest diplomatic missions in Islamabad as the senior manager for their property. In the meantime, मैंने जब मैं move किया पाकिस्तान तो मैंने masters project management में भी किया, and I topped my batch. I got director's gold medal as well in masters in project management. So that's what my professional journey is. Plan कुछ सिर्फ इतना था कि I will get into managerial positions, and where I am right now is just because it's a continuous effort to convert the challenges into opportunities, and that's it. माशाल्लाह, बहुत मजे की जर्नी इसलिए है बिकॉज यू थिंक इट्स मिड करियर, बट आई थिंक यू आर वेरी यंग, योर जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड, यू हैव अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह। हाँ, ये और बात है कि माशाल्लाह आपने अचीव बहुत कुछ कर लिया इस टाइम में, सो विच इज ग्रेट, एंड इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट, होपफुली यू विल गो अ लॉट मोर फर्दर एज वेल। जी, तो अब आप माशाल्लाह अपनी जबरदस्त सक्सेसफुल जर्नी को देखते हुए कुछ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, हाउ डू यू सी इट एट दिस पॉइंट? मे बी आपको एज यंग ग्रेजुएट, यू स्टिल यंग, बट यू नो व्हेन यू ग्रेजुएटेड बैक इन 2012 तब आपको कुछ डिफरेंट लगता हो, अब डिफरेंट लगता है। वेयर डू यू सी योरसेल्फ एंड वेयर डू यू सी व्हाट अ सक्सेसफुल पर्सन शुड बी? Well, definition of success, as you mentioned, कि हमेशा से लाइफ में इंसान की चेंज होती रहती है। हर बंदे की भी डिफरेंट होती है, एक बंदे की भी ओवर द इयर्स डिफरेंट हो सकती है। जैसे अगर मैं FSC की बात करूं तो सक्सेस टू मी वाज गेटिंग इनटू NUST। NUST में आकर बात करूं तो सक्सेस टू मी वाज गेटिंग अ ड्रीम जॉब, और आई मीन ड्रीम जॉब लेने के बाद सक्सेस कुड बी गेटिंग अ ड्रीम गर्ल एंड हैविंग ब्लेस्ड विद द किड्स। सो ये तो आई वुड से कि ये सक्सेस नहीं थी। आई लेटर ऑन इट रियलाइज्ड इट कि ये सक्सेस नहीं थी डेफिनेशन उसकी। दोज आर बेसिकली गोल्स, ठीक है। ये सारे गोल्स मिलकर एक लार्जर गोल बनता है, और वो लार्जर गोल अब आई अंडरस्टैंड, I mean it may change at later part of my age, but for me the success would be when I leave this world, I leave behind the kids who could be instrumental
I mean, who could be best human beings and instrumental in bringing good change or positive change in the society. So this to me is the success. इसके साथ आप सारी चीजें attach कर सकते हैं. Definitely you need and you know good financial resources. You need luxurious style. You need to give your kids the good relations. So ये सारा कुछ मिलकर ये मेरा एक मैं समझता हूँ कि सक्सेस ये गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन होती है ना, every day you get up and you realize that there is some progression achieving that large goal. ये realization continuously आते रहना और predetermined plan step by step बनाना, that realization, that satisfaction is basically success to me. बहुत हार्ट वार्मिंग डेफिनेशन है आपकी. आई रियली रियली अप्रिशिएट इट एंड आई रियली लाइक इट. और जो आपने बात की, लीविंग किड्स बिहाइंड विद these values, that they end up being a positive person in the society who can bring a change, who can do something for better. उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को उस तरह करें so that they look up to us, और उसके लिए continuous कोशिश करते रहना. That's definitely success. And society is in dire need of good human beings. True. Good human beings की जरूरत बहुत सबसे ज्यादा है society. Yes, good human beings are needed more than good engineers. They are needed more than good, any degree holders, not just engineers. Definitely, better human beings and kindness is what we need, with all of us. Exactly. Let alone the religious zeals. My focus is primarily on the raising up the kids with good moral values. True. बिल्कुल, डेफिनेटली. हर अच्छी आपकी डेफिनेशन है. उसी को देखते हुए आपको मैसेज देना चाहेंगे आजकल के स्टूडेंट्स को, यंगर ग्रेजुएट्स को? स्की के साथ एक बहुत ज्यादा एसोसिएशन है. ऑलवेज प्रेफर गोइंग टू स्की. आई ऑलवेज लाइक टू टॉक टू दी current students. हमेशा मैं उनसे couple of points पे बात करता हूँ that you immediately as you get into the university you need to know the learning patterns are different than the colleges. आपको फौरन से learn कर लेना चाहिए. जितना जल्दी करें उतना बेहतर है. Then अपने vision को broad करने की जरूरत है. You are students of number 1 university of Pakistan. आपका विजन सिर्फ डिग्री लेने पर नहीं होना चाहिए. You should be if I talk about SCEE, तो you should be leading the construction industry of Pakistan. तो आपके ऊपर अपनी जात के अलावा एज अ नेशन की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास है. आपको उस चीज को फील करना चाहिए. आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट, यूनिवर्सिटी, यहाँ के क्लासरूम्स, फैसिलिटीज, फैकल्टी, clubs, societies, every ambience is going to change you, यहाँ के labs. But at the same time, you should also try to bring change in the university. I mean, for your successors, for your juniors, to make it a university where you want to see it. ठीक है? तो innovation, improvement, university के अंदर इसको भी अपनी liability बनाएं. ठीक है? और एक ये मैं बात करता हूँ. Then ऐसे कि आप क्लब्स जो भी शुरू करना चाहते हैं वो क्लब स्टार्ट करें. अटेंड क्लास ऑफ एनी टीचर. आई मीन एक नस्ट आपकी बात सुनता है. नस्ट वोकलाइजेस फॉर योर इंटरेस्ट. दैट्स व्हाट यू शुड नो. अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपने क्या करना है, इवन देन नस्ट इज गोइंग टू हेल्प यू. सो that's what my point is. Change the university, change the environment for your coming generations. क्योंकि हमारे पास जो lack of facilities थी वो आपके पास नहीं है. हमने तो उस वक्त नस्ट का मास्टर प्लान बैक इन 2008 सिर्फ देखा था. आपने उसको मटीरियलाइज्ड वर्जन उसका देखा है. हमारे पास वो फैसिलिटीज थी. तो इसको लार्जली देखें. देन इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग a great engineer or a great doctor. It's social entrepreneurship के ऊपर I always tell them कि यार देखें, Pakistan is a very young, हमारी जो average age है, it's very young Pakistani nation की. So, but unfortunately our happiness index of the nation is too low. Why is it low? Because our graduates are just focusing on being employable. They are not getting the industry skills. I mean, they especially engineers, they have poor soft skills. तो हमें employability से ज़्यादा focus करना चाहिए soft skills के ऊपर, industry skills के ऊपर during our student life. So for that, I mean, मैं अगर mid career level को almost गुजार चुका हूँ. I am getting into managerial positions now. What is an employer expecting of me? They expect that I have a senior management, I have a lower tier. In between, I lie somewhere. When I join a job,
मुझे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को खुद ही समझना है और सिस्टम को चलाना है और उसके अंदर कंटिन्यूअस एक इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। तो दैट्स व्हाट द एम्प्लॉयर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आपके टेक्निकल स्किल्स मैटर करते हैं, नो डाउट, बट सॉफ्ट स्किल्स और भी ज्यादा मैटर करते हैं। कम्युनिकेशन, आपकी लीडरशिप, आपके मैनेजरियल मैनेजमेंट स्टाइल, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, आप चेंज किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करते हैं, किस तरीके से डिलीवर करते हैं चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में। यू नीड टू बी कंसल्टिव विद योर टीम, यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेट योर अथॉरिटी। तो ये सारी चीजें ये कंपाउंड होकर एक आपके सॉफ्ट स्किल्स बनते हैं, और इसमें हमारे इंजीनियर्स को, हमारे यंग ग्रेजुएट्स को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। एंड टू हेल्प ईच अदर, आई ऑलवेज प्रमोट हेल्पिंग ईच अदर by saying that if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. That's what my message is for the students and young alumni. बहुत अच्छा मैसेज है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड आई टोटली 100% एग्री विद इट। आई ऑलवेज ट्राई टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आप कह रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी को सिर्फ इतना नैरो फोकस रखेंगे कि हमें जॉब मिल जाए तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अपना थोड़ा सा विजन ब्रॉड करके यू वांट टू स्टे इन द जॉब, यू वांट टू ग्रो इन द इंडस्ट्री, तब ये सारी स्किल्स आपको चाहिए। अदरवाइज सिर्फ जॉब लेके वहीं पे आपने नहीं रहना सारी जिंदगी। आप करियर बनाना चाहते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, आप आगे जाना चाहते हैं, उसके लिए सारी स्किल्स बहुत बहुत जरूरी हैं। और हम अक्सर देखते हैं कि इंजीनियर्स जो हैं वो इन कोर्सेज को भी इतना सीरियस नहीं लेते जो पढ़ाए जाते हैं, अगर कोई मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। और अदरवाइज भी इनका उतना फोकस नहीं होता बिकॉज दे थिंक हमने सिर्फ टेक्निकल चीज करनी है और 2+2 हमें आता है, सो वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट। बट नो, इफ यू वांट टू स्टे इन द इंडस्ट्री, यू वांट टू गो ahead, you want to go far and you want to grow, it's very very important. So very valid message, thank you so much for sharing that. You're welcome. अब हम इंटरव्यू रैप अप करने के लिए एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे विच इज कॉल्ड अवाम का सवाल, एंड वी ट्राई टू रीच आउट टू फ्रेंड्स ऑफ आवर गेस्ट। और आपके एक फ्रेंड को, आई होप यू कॉल हिम फ्रेंड बिकॉज वो सीनियर हैं, डॉक्टर सोहेल सर्वर, सोहेल भाई ने क्वेश्चन पूछा है आपसे। वो भी आपसे जो हम नेटवर्किंग स्किल्स और इन सारी चीज़ों की बात करते रहे हैं, आपकी एनर्जी की, ही वांट्स टू नो आप कौन सी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। इज दैट द वन यू आर ड्रिंकिंग राइट नाउ? कौन सी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं आप? You know, एनर्जी ड्रिंक तो मैं कोई भी नहीं पीता, बट माय व्यू इज के चीजें हमेशा से मैनेज की जा सकती हैं। से I had never been lethargic. I am always full of enthusiasm. No matter you call me at 2 a.m., even if I am sleeping, if you need me, I'll always be available for you. मेरे से, I mean, definitely in my humble capacity, if I can oblige someone, I always do. No, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा. I have always, at least guided them or provided them the requisite information. That's what my point is. और कभी ऐसा फील नहीं, आई मीन मेरी फैमिली कभी मुझे कहती है व्हाई डोंट यू केयर फॉर योर हेल्थ, कि आप सारा दिन सुबह 6 o'clock से लेकर रात को 1 बजे तक कंटिन्यूअसली यू आर डूइंग समथिंग। I mean, I definitely have side hustles as well for my own well-being, for my own future, for my family's future, besides having this NUST position. So in 30 from 30 to 40 is the age when at the end of 40, I mean in the late 30s, you should be at the top of your career. चाहे कुछ भी है, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे एनीथिंग। सो और इस दौरान अगर आप रेस्टलेसनेस है ना, दिस शुड नॉट बी द रीजन टू स्टॉप यू। इतना सीरियस आंसर मैंने नहीं पूछा था, लेकिन स्टिल इट्स अगेन अ वेरी वैलिड आंसर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द टिप्स आपकी जर्नी के और बारे में और आपकी पर्सनालिटी के बारे में। Excuse me, I would like to appreciate Dr. Sohail Sarwar as well for his services. I mean, मैं ये समझता हूँ कि being vice president of engagement of NUST Alumni Association, मेरे अंदर शायद इतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी डॉक्टर सोहेल ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड ईच एंड एवरी वेंचर जो कि NUST Alumni Association इस वक्त कर रही है। डॉक्टर साहब जितना टाइम एसोसिएशन को देते हैं, इतना टाइम आई डोंट थिंक सो कि कभी भी कोई दे सकेगा इन फ्यूचर। नॉट इवन माई सेल्फ कैन डू justice with this position. So डॉक्टर साहब इज बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स जो कि इस एसोसिएशन को लेकर कर रहे हैं।
Definitely, totally agree. Mashallah, he's a very, very positive person, very encouraging, and he can do. He's just the person who can do and make things happen, Yes, mashallah. So NUST he's is a very doer. lucky. Definitely. थैंक यू सो मच आपके टाइम का ये सब कुछ शेयर करने का, आपकी पर्सनालिटी के बारे में और जानने का हमें चांस मिला. होपफुली इट विल बी अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर आवर व्यूअर्स, स्पेशली यंगर स्टूडेंट्स, एंड विल बी इन टच. और हम आपको स्टार्स ऑफ नास्ट पे दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह. Sure, inshallah. Thank you very much once again for having me here. और मेरे ख्याल में a shout out to all the listeners. Stars of NUST is doing a superb job, and that too voluntarily only. And I think so. Never before and never again someone can manage this quantum of work. Thank you very much to all of you. You're most welcome. Thank you so much. Always need this encouragement to keep going forward. आपकी help का, आपकी support का भी बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you everyone for watching. Stay tuned for more stars. We'll be bringing them. Allah Hafiz.